बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक की इन द इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दैट इज लैटिमर डायग्राम। तो यूजुअली ये जो है ये टॉपिक इट इज इंक्लूडेड इन द BSc सिलेबस एंड इन द MSc सिलेबस ऑफ द वेरियस द कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज इन द इंडिया। ओके, और इस पे ज़्यादा मटेरियल बुक्स पे इतना ज़्यादा मिलता भी नहीं है। ओके, विल स्टार्ट इट। तो हम कोशिश करेंगे इस लेक्चर में कि टू मेक इट वेरी मच कंसाइज। आज की इस टॉपिक में आई विल जस्ट गो फॉर द इंट्रोडक्शन एंड देन इन द नेक्स्ट क्लासेस विल टॉक अबाउट द लैटिमर डायग्राम्स ऑफ आयरन, मैग्नीज एंड कॉपर। सो लेट अस स्टार्ट विद द लैटिमर डायग्राम। सो एज द वर्ड सजेस्ट दैट इट्स अ डायग्राम, ठीक, एंड इट वाज बेसिकली गिवन बाय a scientist called as W.M. LATIMER. So ये डायग्राम्स पहले जो है उन्होंने बनाई थी, सो प्रपोज की थी, सो दे आर कॉल्ड एज द लैटिमर डायग्राम्स। ठीक है, now what is this all about? This latimer diagram basically it's a representation, or I should say it's a diagrammatic representation. Diagrammatic representation or I can write that it's a summary. Summary represented by some diagram. Summary of what? Diagrammatic representation of what? किसकी diagrammatic representation? Of various oxidation states. Various oxidation states. Oxidation states of an element or a chemical species. किसी भी element, we know that particular, since we are dealing with the transition metal chemistry, that the various transition element they have variable oxidation states, many oxidation states. तो ये जो बहुत सारे oxidation states है transition metals की, we will represent them by a diagram, ठीक है, or so we'll represent them by a diagram. So this diagrammatic representation of various oxidation states of an element, this is basically your Latimer diagram. So this is in a nutshell your Latimer diagram, that representation, graphical representation, diagrammatic representation or summary of various oxidation states of an element. So this is all about the basics. Now अब इसको ड्रा कैसे किया जाता है? So how to draw it, या how to draw this diagram. Drawing बहुत simple है, that what you have to do. Let us say that जब हमने कहा there are various oxidation states of element, तो obviously we have, उनमें से एक होगा जिसका highest oxidation state होगा, highest oxidation state सबसे ज़्यादा, और उनमें से एक होगा which is the lowest one state. So the rule is that how to draw the diagram. आपको क्या करना है? Now this is our left side and this is our right side. So left side से आप लिखेंगे highest oxidation state, highest oxidation state of element, उसको आप लिखेंगे left side से, ठीक है, and then on the extreme right you will draw the lowest oxidation state, और बाकी जितने भी होंगे they will come in between. For example, if it is +6, then it will be +5 here, +3 here, +2, and the lowest will be here. So rule that you write down the highest oxidation state on the left side of your copy and the lowest oxidation state on the right side. उसके बाद let us say अगर किसी एलिमेंट की दो ही oxidation state है, so one will be the highest, one will be lowest, and they will be connected through an arrow like this.
pointing from highest oxidation state to the lowest oxidation state. Now let's take an example. कोई भी ट्रांजिट मेटल है उसको ऑक्सीजन स्टेट हाईएस्ट है +3, lowest is +2. So we'll show them +3 on this side, +2 on this side, then an arrow in between pointing from the one which has the highest oxidation state towards the one which is the lowest oxidation state. ठीक है. Now उसके बाद जो एरो है उसके ऊपर आप लिखेंगे जो आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू है E star. So or you see the reduction potential value. So electrode potential value का जो है उसको ऊपर लिखेंगे in the bracket. ठीक है. So that you show in the bracket. If it is plus, then you can write the sign also with it. So this is in nutshell the Latimer diagram. For example, if we just put an example, let us take an example, short example, क्योंकि हमें यहाँ पे दिखाने आयरन की example. Iron, we know one of the highest oxidation states is +3, and then its another oxidation state is +2. Now if we want to show the diagram, the Latimer diagram for these two, मैं यहाँ पे complete नहीं दिखाऊंगा, just थोड़ा सा representation के लिए. तो we'll show it like this: Fe +3, and this side बीच में arrow और यहाँ पे lowest oxidation state. अब जिस reduction potential पे, जिस potential पे +3 is getting converted to +2, that reduction potential value I will write here. So that is E star. ठीक है. Even you can write it directly also, that is equivalent to 2.20. साथ में unit volt लिखना है, इसको जरूरी है. Or you can remove this. You can directly also write this Fe 3, Fe2, and then write plus 2.20 volt. V stands for volt. Now this is in general how we represent the Latimer diagram. अब इसमें और भी है, फॉर एग्जाम्पल आयरन 0, फिर आयरन 0 और आयरन 3 के बीच में क्या रिलेशनशिप है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, दैट आई विल नॉट शो हियर बिकॉज उसके लिए एक टॉपिक ही आ जाएगा, द Latimer diagram ऑफ आयरन. सो दिस इज इन नटशेल हाउ वी रिप्रेजेंट द Latimer diagrams. दैट जो एलिमेंट का हाईएस्ट ऑक्सीजन स्टेट है दैट यू पुट ऑन द लेफ्ट साइड, एंड जो लोवेस्ट है दैट यू कीप ऑन द राइट साइड, एंड देन you connect them by the arrow. और arrow जो है that points from the one which is in the highest oxidation state to the lowest one. और arrow के ऊपर you write the reduction potential value, whether it is plus or minus with unit volt. ठीक है. This is all about Latimer diagram. Now the question is, what is the advantage? Since it's an introduction part, so what is the use of this diagram? देखिए एक यूज ये है दैट जो भी redox reactions होती है, redox reaction में obviously the chemical species, two chemical species will react with the they will undergo the redox reaction, that is transfer of electrons imprinting them to form new product. So we can predict formation of product in the redox reactions. ठीक है, number one. Number two, we know there's a concept called as disproportionation. एक element एक particular oxidation state में उसकी tendency ये होती है कि it can get oxidized also and reduced also. Now that tendency to get oxidized and reduced is called disproportionation. So we can predict कि chemical species किस oxidation state में it can undergo the disproportionation, या whether an element in a particular oxidation state will undergo disproportionation or not. So we can predict disproportionation
disproportionation. Please look at the spelling. So disproportionation means oxidation, self-reduction of an element in particular oxidation state in some particular oxidation state. So you can predict the disproportionation. ठीक है, ये दो मेन चीजें हैं. And इसके अलावा जो मेन another point is that ये जो Latimer diagrams, they are useful in construction of frost diagrams. तो ये फ्रॉस्ट डायग्राम्स एक नया कॉन्सेप्ट आ गया दैट आई विल नॉट डिस्कस हियर. बट फ्रॉस्ट डायग्राम्स में क्या होता है, हम रिलेटिव स्टेबिलिटी देखते हैं वेरियस ऑक्सीडेशन स्टेट्स की उस पे, बट दैट वी विल नॉट डिस्कस दैट हियर. बट इन जनरल इट इज यूजफुल फॉर द कंस्ट्रक्शन. दिस डेटा, ये जो यहाँ से हमें डेटा होता है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज यूजफुल फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्रॉस्ट डायग्राम्स. सो दीज आर द three main applications or uses of your Latimer diagram. That is, you can predict the formation of product in the redox sections, you can predict the disproportionation of an element in a particular oxidation state, and it is useful in the construction of frost diagrams. So this is all about the introduction or basics of the Latimer diagram. It is simply diagrammatic representation of various oxidation states of an element represented by this arrow, where you show the highest one on the left side and the lowest on the right side, and then you point them with the help of this arrow, and above the arrow you write the reduction potential value. And this is all about the today's class. Now in the incoming classes we'll be talking about the Latimer diagram of iron, manganese and copper, and with that help we'll also try to explain the stability of particular oxidation states.